The Manipur Police Department has constituted a high-level committee following the attack carried out by suspected Kuki militants by deploying RPGs using drones, in which one lady civilian was killed and several others, including 3 police personnel, were injured at Kotrok in Imphal West District on September 1st. The high-level committee will be led by additional DGP Manipur Ashutosh Kumar Sinha as the chairman. General Office in command of 57 Mountain Division, Laima Kong Major General S.S. Karthikeya, Inspector General Assam Rifle South Major General Ravroop Singh, Inspector General CRPF Manipur and Nagaland Sector Vipul Kumar, and DIG SHQ BSF CI Ops Manipur J.K. Birdi will be the members of the committee. In this regard, the DGP of Manipur Police has issued an order yesterday and further instructed to submit its report to him by 13th of September. In the aftermath of the recent drone attacks, Manipur DGP Rajiv Singh, accompanied by the SP of Imphal West and the commandant of the 2nd Manipur Rifles, visited the sites of these attacks to assess the situation. Despite the formation of a high-level committee to counter drone threats, the state has requested the expertise of Delhi-based agencies, including the NSG, to address the emerging security challenge posed by these drone attacks, noting that extensive search operations are currently being conducted at 3 to 4 sites where the drone attacks occurred. The DGP stated that violence has escalated. However, the police department is taking the matter seriously. Happened, and we have already, Manipur police ने पहले ही ट्वीट किया हुआ है, so it has been escalated and we are taking it very seriously. We have spoken to everybody from here to Delhi, और वहाँ दिल्ली में भी NSG से भी हम लोगों ने बात किया है, DG NSG से बात किया है, उनकी टीम से बात किया है, प्लस और भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं. हम लोगों ने कमिटी भी एक बनाई है ये ड्रोन के बारे में पूरा ये पढ़ने के लिए एंड समथिंग टू डू काउंटर करने के लिए, उसको कैसे हम लोग आगे करें. आसाम राइफल एक कमेटी तो बना दी गई, बट उसके बाद भी कुछ एक्सपर्ट्स को भी हम लोग बुला रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग कुछ इसका उपाय ढूंढेंगे. वहाँ पर हमारे पास कुछ है काउंटर के लिए, दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डिप्लॉय. और प्लस जो हिल के एरियाज हैं, जो जहाँ पर अटैक हुए हैं 3-4 जगह पे, उन सभी पे हम लोग के ऑपरेशंस चल रहे हैं. कल भी हुए थे, आज भी हुए हैं, आज रिकवरीज भी हुई हैं, कल भी कुछ रिकवरीज हुई थी, तो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता रहेगा. तो वो बिल्कुल ही श्योर रहें कि सो एवरीवेयर कॉम्बिंग ऑपरेशंस विल carry on. Do you really condemn this such type of new things? Obviously, who will not condemn such type? About 198 companies of Central Forces are here, apart from the Assam Rifle. So everybody will combine together and work and try to. Yes, there may be some complaints of some inaction or some passiveness. That we will look into it. इन्होंने भी बताया है, हम लोग जरूर देगा. अभी आपके सामने वो जो कमांडर थे उनको बताया गया है, and we will take it up with the senior officer. वो ऐसा होगा नहीं, अगर कोई एक्टिव नहीं रहेगा और इस तरह की खबर मिलेगी तो विल डेफिनेटली टेक एक्शन, चाहे वो स्टेट पुलिस का हो या सेंट्रल फोर्स का हो. अगर वो अपना काम नहीं कर रहा ठीक से, तो ऑब्वियस है कि भाई इट इज अ डिसिप्लिन फोर्स, प्रोफेशनल फोर्स है, तो उसमें तो हम लोग को ये सब करना ही पड़ता है. ऑब्वियसली वी आर गोइंग ऑल आउट अगेंस्ट देम एंड वी आर डूइंग आवर ऑपरेशंस. आई हैव स्पोकन टू द कोर कमांडर आल्सो, आई हैव स्पोकन टू Assam Rifles all IGs also, and they are also very serious. In fact, DG Assam Rifle has come today and he is also trying his level best. So everybody combined as a team is working together along with the state government. The Honorable Chief Minister is also taking it very seriously, and he has been talking to several people on different fronts, and we are trying to take it as seriously, and whoever has done it, we will not be